Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel here, Anand's Nursing File. Today in this video we are going to learn about nursing care plan, that is cellulitis, and through this video you learn this care plan very easily, and this video helps you to write the nursing care plan in the examination work purpose or for the assignment work purpose. तो फ्रेंड्स आज हम वीडियो में सेलुलाइटिस का नर्सिंग केयर प्लान यहाँ लर्न करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान ऑन सेलुलाइटिस। नर्सिंग केयर प्लान से पहले एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखते हैं यहाँ पर। व्हाट इज सेलुलाइटिस? यार सेलुलाइटिस is a bacterial infection in the deeper layer of skin and the fat and soft tissue underneath. It can cause skin discoloration, swelling, and tenderness. Here, cellulitis is a common, potentially serious bacterial skin infection. The affected skin is swollen and inflamed and is typically painful and warm to touch. This is the short introduction about cellulitis. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान फॉर पेशेंट विद सेलुलाइटिस, तो देखते हैं। केयर प्लान नंबर फर्स्ट, यहाँ पर हम डिफरेंट नर्सिंग प्रोसेस स्टेप्स यूज़ करेंगे, जिसमें नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग और इंटरवेंशन, रेशनल, इम्प्लीमेंटेशन, एवेल्यूशन, ये सारे हमारे स्टेप्स होंगे। तो देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा, पेशेंट वर्बलाइज अबाउट पेन इन अफेक्टेड एरिया, एंड ऑब्जेक्टिव डाटा असेस द पेशेंट्स पेन ऑन रेटिंग स्केल, इन्फ्लेमेशन, ड्राई, flak skin, erosions, excoriations, fissure, pruritus, and blisters. These are the objective data. After writing these data, we write here the nursing diagnosis. There, nursing diagnosis is pain and tenderness related to impaired skin integrity and secondary to cellulitis. Here, goal होगा to relieve pain. प्लानिंग और इंटरवेंशन देखते हैं मिस हमको पेशेंट को क्या क्या इंटरवेंशन प्रोवाइड करने, गोल यहाँ पर रेशनल होगा मीन्स जो हम इंटरवेंशन पेशेंट को दे रहे हैं उसके पीछे क्या रीज़न है, एंड इम्प्लीमेंटेशन इज द एक्टिंग फेज ऑफ द केयर प्लान, मीन्स जो हमने इंटरवेंशन तैयार किया है उसको हमको एक्शन में लाना है, अप्लाई करना। तो देखते हैं फर्स्ट इंटरवेंशन होगा यहाँ पर असेस द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेन, नोट लोकेशन, क्वालिटी, इंटेंसिटी। रेशनल होगा डिटेल्ड रिपोर्ट्स अबाउट द पेन फ्रॉम द पेशेंट अलाउ द हेल्थ केयर टीम टू बेटर इंटरवेंशन प्रोसेस। Implementation होगा assess the characteristics of pain, note location, quality, and intensity. Number second, assess the skin detailedly. Rational होगा body folds areas such as neck, elbow, and back of the knee area are affected by cellulitis. Implementation होगा assess the skin detailedly. Number third, check for skin lesion. Take notice of any excoriation, erosions, fissure, and thickening. रेशनल होगा पर देयर इज एन इंक्रीज रिस्क फॉर इन्फेक्शन विद ओपन स्किन लीजन। इम्प्लीमेंटेशन होगा चेक्ड फॉर स्किन लीजन, टेक नोटिस ऑफ एनी एक्सकोरिएशन, इरोजन, फिशर एंड थिकनिंग। नंबर 4 देखते हैं एग्जामिन द अफेक्टेड साइट एट लीस्ट वंस ए डे। रेशनल होगा रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ द अफेक्टेड साइट विल हेल्प इन वुंड मैनेजमेंट। इम्प्लीमेंटेशन होगा एग्जामिन द अफेक्टेड साइट एट लीस्ट वंस ए डे, रेगुलर। नंबर 5 देखते हैं एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स एज प्रिस्क्राइब। रीजन होगा एंटीबैक्टीरियल मेडिकेशंस आर यूज टू ट्रीट एन एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन और टू लोअर द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड प्रिवेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशन। इम्प्लीमेंटेशन होगा पर एंटीबायोटिक्स एडमिनिस्टर एज प्रिस्क्राइब। नंबर 6 देखते हैं एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक्स मेडिकेशंस एज ऑर्डर। रीजन होगा पेन कंट्रोल हेल्प द पेशेंट गेट एडिक्वेट रेस्ट, ए स्टेट दैट इज मच नीडेड फॉर हीलिंग। इम्प्लीमेंटेशन होगा पर एनाल्जेसिक्स एडमिनिस्टर्ड। नंबर 7 देखते हैं यूज पिलोज टू एलिवेट द अफेक्टेड एरिया। रीजन होगा ऑफन सेलुलाइटिस इज अकम्पेन्ड बाई स्वेलिंग विच कैन कॉज पेन। एलिवेशन ऑफ द एरिया में हेल्प विथ रिड्यूस एडिमा एंड पेन। इम्प्लीमेंटेशन होगा यूज पिलो टू एलिवेट द अफेक्टेड एरिया। नंबर 8 देखते हैं यहाँ पर टीज द पेशेंट अबाउट द साइन एंड सिम्टम ऑफ सेलुलाइटिस। रेशनल होगा अवेयरनेस ऑफ दी साइंस प्रमोट प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। इम्प्लीमेंट होगा एजुकेशन गिवन टू पेशेंट। नंबर 9 देखते हैं यहाँ पर एजुकेट द क्लाइंट अबाउट एडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन। रेशनल होगा एडिक्वेट हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन असिस्टेंस हेल्प सस्टेन स्किन टारगेट। इम्प्लीमेंटेशन होगा एजुकेशन गिवन टू क्लाइंट अबाउट एडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन। आफ्टर राइटिंग दीज इंटरवेंशंस
वी राइट द एवेल्यूशन स्टेप्स। तो देखते हैं फर्स्ट केयर प्लान का एवेल्यूशन। तो एवेल्यूशन होगा, नाउ पेन इज रिलीव्ड एंड पेशेंट फील कंफर्ट। मीन्स जो हमारा गोल था टू रिलीव पेन, वो आपने अचीव किया है बाई डिफरेंट इंटरवेंशन जो हमने पेशेंट को प्रोवाइड किए। तो इस तरह से हम नर्सिंग केयर प्लान को यहाँ पर फर्स्ट को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर सेकंड। सेकंड हो गया पर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी। देखते हैं इसमें नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा एयर पेशेंट इज दैट आई फील वार्म ऑन लैग, and objective data erythema, warmth and swelling of the affected leg assess the skin condition. नर्सिंग डायग्नोसिस होगा पर impaired skin integrity related to infection of the skin secondary to cellulitis। गोल होगा to maintain skin integrity। इंटरवेंशन देखते हैं फर्स्ट असेस द पेशेंट स्किन रिस्क होगा टू डिटरमाइन द severity of cellulitis and any affected areas that require special attention or wound care। implementation होगा assess the patient skin number second। identify the cause of the skin damage रिस्क होगा टू गाइड इंटरवेंशंस। implementation होगा पर identify the cause of skin damage। नंबर थर्ड outline the affected area with a marker and date it रिस्क होगा this help the healthcare team determine if the infection is becoming worse and if antibiotic treatment is effective। implementation होगा affected area marked। नंबर फोर obtain a wound culture रिस्क होगा knowing the exact organism help provide a more targeted antibiotic treatment। implementation होगा obtained a wound culture। नंबर फिफ्थ देखते हैं मॉनिटर द साइट एवरी 4 आवर रेस्ट होगा इन्फेक्शन में गेट वर्स एंड स्प्रेड विद इन आवर। implementation होगा मॉनिटर द साइट एवरी 4 आवर। नंबर सिक्स एजुकेट द पेशेंट एंड फैमिली साइन एंड सिम्टम ऑफ इन्फेक्शन रिस्क होगा early assessment and intervention help patient the worsening of current condition complication and possible hospitalization। implementation होगा education given to patient and family sign and symptom of infection। नंबर सेवन educate the patient about importance of hand hygiene रिस्क होगा hand washing helps reduce the risk of infection by preventing the spread of germs। implementation होगा education given about importance of the hand washing। नंबर एट monitor vitals and especially temperature रिस्क होगा fever may occur when infectious process spread from the affected area into the bloodstream। The infection is then systematic and the patient may be septic। implementation होगा monitor the vitals and especially temperature। नंबर नाइन देखते हैं check for open lesion and provide skin care as ordered रिस्क होगा open skin provides an entry for bacteria into the body and possibly into the bloodstream। providing routine wound care help reduce the risk of infection and further complications। implementation होगा checked for the open lesion and provide skin care। Number 10 use sterile technique when providing wound care रिस्क होगा this help lowering the risk of infection। implementation होगा use sterile technique when providing wound care। नंबर 11 देखते हैं administer antibiotics as prescribed रिस्क होगा after obtaining culture रिस्क होगा cellulitis is generally treated through the use of antibiotic therapy। implementation होगा administer antibiotic as prescribed after obtaining culture। after writing these interventions we write it the evaluation steps। देखते हैं केयर प्लान नंबर सेकंड का एवेल्यूशन। तो यहाँ एवेल्यूशन होगा स्किन इंटीग्रिटी मेंटेन मीन जो हमारा गोल था टू मेंटेन स्किन इंटीग्रिटी वो हमने अचीव किया है बाय डिफरेंट इंटरवेंशन। तो इस तरह से नर्सिंग केयर प्लान नंबर सेकंड को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर थर्ड। नर्सिंग केयर प्लान नंबर थर्ड हो गया पर इम्पेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन। तो देखते हैं सबसे पहले नर्सिंग असेसमेंट में subjective data patient says that there is a reduced sensation in the extremities of the objective data here assess for sign of decreased tissue perfusion prolonged wound healing skin is cold to touch and weak peripheral pulses। nursing diagnosis होगा पर impaired tissue perfusion related to interrupted blood flow secondary to cellulitis। गोल होगा to maintain adequate tissue perfusion। नर्सिंग इंटरवेंशन फर्स्ट देखते हैं असेस द पेशेंट्स पल्सेज एट लीस्ट एवरी 4 आवर रिस्क होगा वीक एंड थ्रेडी पल्सेज में इंडिकेट लेक ऑफ परफ्यूजन। implementation होगा असिस्ट द पेशेंट्स पल्सेज एट लीस्ट एवरी 4 आवर। नंबर सेकंड असेस द स्किन कलर टेम्परेचर एंड सेंसेशन फॉर ऑल एक्सट्रीमिटीज रिस्क होगा पेल कलर कलर ब्लूइश डिस्कलेशन और स्पॉट स्किन में भी एज
an indication of the presence of blockage in the skin. Implementation होगा assess the skin color, temperature and sensation of all extremities. नंबर 3 देखते हैं elevate the affected area. इसमें होगा elevating the affected area may help decrease swelling. Implementation होगा elevation given to affected area. Number 4 apply balm compresses as prescribed. इसमें होगा a balm compress helps soothe the affected area and promote circulation. Implementation होगा balm compresses applied. Number 5 take note of the capillary refill time. रेशन होगा normal capillary refill time should not exceed 3 seconds for nail beds. Pale nail bed are an indication of poor perfusion. Implementation होगा capillary refill time noted. Number 6 check hemoglobin level regularly. रेशन होगा low oxygen saturation and affinity for hemoglobin. The oxygen utilization will be reduced, resulting in the less amount of oxygen circulating in the body. Implementation होगा hemoglobin level check. Number 7 देखते हैं evaluate the patient's mental status. रेशन होगा any changes in the level of consciousness, Glasgow Coma Scale GCS scoring or any neurological monitoring system may indicate a decrease in the cerebral perfusion. Implementation होगा पर patient's mental status evaluated. Number 8 देखते हैं administer medications as prescribed to treat the infection. रेशन होगा infection often create inflammatory processes causing swelling at the site. Treating the infection will reduce inflammation and swelling. Implementation होगा पर medications administered. After writing these interventions, we write here the evaluation step. तो देखते हैं केयर प्लान नंबर 3 का evaluation. तो evaluation में हमको लिखना है यहाँ पर टिश्यू परफ्यूजन मेंटेन्ड. मीन्स गोल था टू मेंटेन एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन. हमने अचीव किया है बाई डिफरेंट इंटरवेंशंस जो हमने पेशेंट को प्रोवाइड किए. तो इस तरह से नर्सिंग केयर प्लान नंबर 3 को हम कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर 4. नर्सिंग केयर प्लान नंबर 4 हो गया रेस्ट फॉर डिस्टर्ब बॉडी में. तो देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा नॉट एप्लीकेबल एंड ऑब्जेक्टिव डाटा नॉट एप्लीकेबल बिकॉज दिस इज रिस्क डायग्नोसिस. नर्सिंग डायग्नोसिस में लिखने पर रिस्क फॉर डिस्टर्ब बॉडी इमेज related to visible skin lesion secondary to cellulitis. गोल होगा the patient will extract positive feelings about their physical image and will take about having feeling of increased self-esteem. Intervention देखते हैं first assess the client's understanding of the changes in the physical appearance. As healthcare provider will we need to acknowledge the client's reaction to the changes in their skin, especially those that are visible due to inflammation reaction. Implementation होगा पर assess the client's understanding of the changes in the physical appearance. Number 2 देखते हैं assess the client's way of behaving associated with the appearance. रेशनल होगा patient due to negative self image may attempt to conceal their skin lesion. Implementation होगा assess the client's way of behaving associated with their appearance. Number 3 guide the patient in expressing their responses fluently and coherently to questions from other concerning lesion and transmission of the disease. Implementation के ऊपर the patients may need assistance in knowing how to respond to questions asked or opinion of other concerning their skin appearance. Implementation का guidance given to patient. Number 4 देखते हैं guide the patient in determining the way to improve their appearance, educate the client about adaptive practice. Rational होगा these adaptive mechanisms help the client utilize the existing changes in the body structure and function. The client may need assistance in choosing opinions that will not worsen their skin condition. Implementation होगा guidance given to patient. Number 5 put limitations on the maladaptive behavior. Rational होगा sustain a neutral behavior while providing care and guide the patient to identify a positive attitude to promote recovery. Implementation होगा put limitations on maladaptive behavior. Number 6 देखते हैं prepare detailed material and accomplish after care direction for the patient. Rational होगा strengthening teaching can support the patient to attain self care. Implementation होगा material prepared and direction given. Number 7 express positive and care in daily activity. Rational होगा a positive attitude by the nurses and other healthcare workers expand positive feedback to the changes of the client's body. Implementation होगा express positive and care in daily activities. Number 8 देखते हैं
provide positive feedback on the client's improvement and motivate the goal in the direct attainment of the rehabilitation objectives. Rest होगा motivational and encouraging word can promote the development of coping attitude. Implement होगा provide positive feedback. Given number 9, promote interconnection between the patient, family member, and member of the rehabilitation group. Rest होगा healthy discussion bring assistance between the patient and their family. Implement होगा promoted interconnection between the patient, family member, and the member of the rehabilitation group. After writing these interventions, we write it the evaluation steps. तो देखते हैं यहाँ पर केयर प्लान नंबर 4 का evaluation. तो हमको evaluation में लिखना है patient showing positive feeling about their physical image and talk about having feeling of increased self esteem. तो इस तरह से केयर प्लान नंबर 4 को हम कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर 5. नर्सिंग केयर प्लान नंबर 5 हो गया पर रिस्क फॉर इन्फेक्शन. देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट में नॉट एप्लीकेबल एंड ऑब्जेक्टिव डाटा, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा दोनों में नॉट एप्लीकेबल लिखना बिकॉज दिस इज रिस्क डायग्नोसिस. नर्सिंग डायग्नोसिस देखते हैं रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू टिश्यू इंजरी गोल होगा टू रिड्यूस रिस्क फॉर इन्फेक्शन. इंटरवेंशन देखते हैं फर्स्ट असेस द पेशेंट स्किन ऑन his or her whole body risk logo to determine the severity of the cellulitis and any affected area that require special attention or wound care. Implement इसका assess the patient skin on his or her whole body. Number 2, administer antibiotics as prescribed risk logo to treat infection. Implement इसका administer antibiotics as prescribed. Number 3, educate the patient and caregiver about proper skin hygiene through washing it with soap and water. It is important to maintain the cleanliness of the affected area by washing with mild soap and water. Implement education given to patient and caregiver about the proper skin hygiene through washing it with soap and water. Number 4, trim the patient's fingernail and advise the patient and caregiver to prevent scratching the affected area. Long fingernails tend to harbor more bacteria. Scratching causes injury. Implement होगा trim the fingernails and advice given. Number 5, ensure frequent hand washing. Rest होगा prevent transmission of infection. Implement होगा ensure frequent hand washing. Number 6, using a skin marker mark the edge of the cellulitis area and observe for its shrinkage or spread. Rational होगा पर this method can help determine whether the antibiotics are effective or if there is a need to change the antibiotic used. Implement इसका cellulitis are marked. After writing these interventions, we write the evaluation steps. तो देखते हैं यहाँ पर केयर प्लान नंबर 5 का evaluation. तो evaluation का risk for infection reduce मीन्स जो हमारा गोल था to reduce risk for infection वो हमने अचीव किया है. तो इस तरह से हम यहाँ पर केयर प्लान नंबर 5 को कंप्लीट करते हैं. और ये थे हमारे सेलुलाइटिस के टोटल 5 नर्सिंग केयर प्लान जो अभी हमने वीडियो में देखे हैं. तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो. आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल प्रिपरेशन फॉर द नर्सिंग कंपटीशन एग्जामिनेशन. जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा यूट्यूब चैनल तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा. थैंक यू.